Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine at your home and enjoying the studies at your home. I am Disha, your English faculty at Motion Education. Today I am here, as you all of you know, that we are here to discuss the IEO Level 2 for class 6th. I know you have qualified Level 1 and you had done a lot of hard work for that. But now you need to do much more hard work for this time for IEO Level 2. So don't worry, we are here for helping you people. So today we are discussing the PYQs of Level 2 for class 6th. But before that, I want to discuss something else with you. That is the paper pattern and weightage of the IEO Level 2. So first of all, you can see that exam has 50 questions for 60 marks and it is divided into different sections. It is of 50 questions for 60 marks. Section 1 comprises of word and structure knowledge, that is of grammar and vocabulary. And this section is of 35 marks. Now, in grammar, what are the important topics that you need to learn? Like all the important topics, all the topics are important for this level. That is for noun, pronoun, verbs, adjectives, adverb, articles, conjunction, preposition, tenses, voices, narration, etc., etc. So you need to learn all of this very well. That is next part, that is the important part of Olympiad, that is vocabulary, vocab portion. Vocabulary needs, it includes spellings, collocation, phrasal verbs, idioms, synonyms, antonyms and lots of other words, one word substitution, etc. So all of this will come in this part. Now, next section is of reading comprehension and this section is of 10 marks. And reading in reading comprehension, as we all know, 2 passages are given there. You need to read to read all of them and then answer them accordingly. Now, section 2, that is reading comprehension. In this, there are 2 kinds of questions, 2 kinds of passages. First one is like information retrieval. And it includes finding specific details from various texts, etc. Broad understanding you need to do in this section, like grasping main ideas from short stories, news, reports and messages. Now, the third section, that is spoken and written expression, and it is of 5 marks and again an important part, and it includes like functions of languages, language applications and etc. Now, after that, the one of the most important section, that is achiever section, and it is of 10 marks. In this sections, all the important topics of all the sections are given there, like reasoning, question drawing from all the 3 sections. From all the 3 sections, all the important question, difficult level will be increased here and all will be given here. Now, let's begin step-by-step strategy how to conquer this mountain, that is IEO Level 2. So first of all, revise English fundamentals. You need to revise all the English fundamentals very carefully. That is grammar, vocabulary, comprehension, basics, all the things you need to revise them. Second is solve IEO Level 2 previous year papers. You need to revise all the PYQs. And this is the most important things you need to do for the IEO Level 2. So you need to solve all the IEO Level 2 previous year's paper. Third is attempt full IEO Level 2 mock test. बहुत सारे mock tests given है. You need to attempt all the mock test. Focus on achiever section because this is the one of the most difficult sections. So you need to focus on achiever section. Practice reading comprehension daily. Yes. Yes, now the most important thing is that is stay calm. Okay, घबराना नहीं है, बिल्कुल calm, शांत रहना है, stay calm. Meditate or take deep breaths before exams to stay relaxed and focused. Yes, important one, बहुत ही important है हर exam, not only about IEO, that it is of for all the exams that you need to stay calm and meditate or take deep breath. Exam से पहले एक लंबी सांस लो, खुद को relax हमको करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next, prioritize questions.
क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करो, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको हम, जिनके ऊपर हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इन द टेस्ट सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हमको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ताकि हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। सो पहले हम लोगों को कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जो इजी हैं, एंड देन टेकल टाइम कंज्यूमिंग वन। उसके बाद में जो डिफिकल्ट हैं, जिनको समझने में हमको टाइम लग रहा है, उनको हम बाद के लिए छोड़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द PYQ. You can see for question 1 to 24, choose the correct option to fill in the blank. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 24 में आपको choose the correct options to fill in the blanks. Fill in the blanks में से आपको सही चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है. Now first question. Regular exercise. Just a minute. Yes. Regular exercise and balanced diet mainly contribute to the dash of a healthy life and prevent any kind of diseases. Now understand the question very calmly. सबसे पहले आराम से, शांति से हमको क्वेश्चन को समझना है कि इसमें पूछा क्या है. रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट मेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट मेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू डैश ऑफ अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट, एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजीज, और किसी भी तरह की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज फोकस करनी है कि यहाँ पे एक वर्ड आया प्रिवेंट, किसी भी चीज को दूर करना, प्रिवेंट. जस्ट अ मिनट. प्रिवेंट. सो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज है, प्रिवेंट है, बैलेंस डाइट है, हेल्दी लाइफ है. इन सारी चीजों को देखकर हम वन बाय वन नाउ कम टू द ऑप्शन. Now option number 1 is longevity and chronic. Second is parody and bond. Third is sagacity and rarity. D option is levity and acute. So first of all, try to understand the meaning of these words. So first of all, A option, that is longevity. The meaning of longevity is long term. Long term. Or we can say long duration also, you can say. Then chronic. Chronic means, I hope all of you know the meaning of the chronic, that is long lasting disease. Chronic is used for long lasting diseases, right? So both of these, the meaning of both of these words are given here. Now come to the option number 2, that is parody. Parody means, parody is done for the fun, to imitate someone, right? So parody is imitation for fun. We can write imitation for fun. And the next word is, that is bond. Bond is the past participle of bear. The word bear, that mean to carry something. Third one is sagacity. Sagacity means wisdom. Similarly, lability means lack of seriousness. Lack of seriousness. Now acute, dreary means dull or sad. So now come to the question. Regular exercise and a balanced diet mainly contribute to. Regular exercise और balanced diet से हम इन options में से कौन सा correct आपको most appropriate हमको लग रहा है, that is the option number 1, that is longevity and chronic. Regular exercise and balanced diet mainly contribute to the longevity, that is long term life, and of a health life, and prevent any kind of chronic diseases. Chronic diseases means long term disease. तो balanced diet और regular exercise हमको लंबे समय तक किसी भी chronic disease से prevent करके रख सकता है. So option number 1 is right. Let's check it down. Yes, A option is correct. Now move to the second one. She was given a mint in the guise of cure, but she claimed she got better
That's called the effect. Now here in this question, he talk about that's called the effect. He calls about something like a effect. किसी particular effect के बारे में यहाँ पर वो बताना चाह रहा है. So first of all, we can see the option number 1, panacea. What is the word panacea means? Panacea. So panacea means it is used for something like cure or solution. Like panacea means cure or solution. Torpid is used for the meaning of torpid is lazy. Vicinal is used for something like nearby place or nearby. Placebo. What is the term placebo means? Placebo, a person feels better after taking some harmless thing and believing it as a medicine. Right? What is the effect placebo means? Placebo, when a person believes anything like a medicine, but that should be an harmless thing. Right? So, यहाँ पर effect है, here we talk about the effect. So, I think the option number D is the right one. That is, she was given a mint in the guise of cure. उसको guise का, what is the meaning of guise? Guise मतलब भ्रमित. राइट हिंदी में हम भ्रमित बोलते हैं. उसको बहला करके एक मिंट दिया गया है फॉर क्योर, किसी भी इलाज के लिए. बट शी क्लेम्ड शी गॉट बेटर. लेकिन उसको लेने के बाद भी उसको लगा कि वो बेटर हो रही है. लाइक तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? किसी को भी कुछ भी दे करके बोल देंगे ये दवा लो इससे तुम ठीक हो गए, लेकिन उसके बिलीव की वजह से, उसको बिलीव करके कि हाँ एक मेडिसिन है, उसने उसको लिया और उससे वो ठीक अच्छा फील करने लगी. दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. लेट्स चेक इट डाउन. यस, ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The moment of the concert, it started raining heavily. Dash, having brought umbrellas, they still got wet. Yes. Now try to understand the meaning of the question also. Now, stormed of the moment dash of the concert, it started raining heavily. Started raining heavily. Dash, having brought umbrellas, they still got wet. अम्ब्रेला होने के बाद भी वो लोग गीले हो गए, वेट हो गए. सो द मोमेंट ऑफ द कंसर्ट. राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस. इट स्टॉर्म्ड ऑफ. स्टॉर्म्ड ऑफ मीन्स टू कम. स्टेप्ड आउट का मतलब केम आउट. स्टेप्ड आउट मीन्स केम आउट. स्ट्रेच्ड आउट, spread or extended, or we can say extended. Like now one thing we also now we can relate this thing with the next word also, like next blank also, like in spite the moment dash of the concern. इट मीन्स वो मोमेंट जब मैं कंसर्ट से बाहर आ रहा था. तो यहाँ पर मैं बाहर आ रही से मीनिंग को लेकर केम आउट. दे स्टेप्ड आउट, वो बाहर आ रहे थे. दे स्टेप्ड आउट ऑफ द कंसर्ट. इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई थी. एंड डिस्पाइट हैविंग ब्रॉट अम्ब्रेलाज दे स्टिल गॉट वेट. और उनके पास में अम्ब्रेला होने के बावजूद, छाता होने के बावजूद वो लोग गीले हो गए थे. तो सेकेंड ऑप्शन इंस्पाइट, डिस्पाइट ऑल दो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिंस बिल्कुल नहीं हो सकता, इंस्पाइट हो सकता है, डिस्पाइट हो सकता है, बट द फर्स्ट ब्लैंक इट स्टेप्ड आउट इज द करेक्ट वन. सो वी कैन चूज दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे स्टेप्ड आउट. लो सो सी, let's check the answer. Yes, B1 is the correct one. Now question number 4. The final round has already taken place between both the finalists. Dash had played well in the semi-finals. Dash their opponents. Opponents means against. Opponents का मतलब दो विरोधी टीम. Against, right? The final round has already taken place between both the finalists. दोनों finalists के बीच में final round हो चुका था already. Dash had played well in the semi-final. Dash their opponents. So now
Look at the options. First of all, that and into, which and for, who and against, and D option is whom and above. So first of all, that is not used for the person, finalist, right? Which is used for person and things also, but for is not the appropriate preposition here. Now, who is used for the person and against is also a appropriate preposition here because against their opponents, दो विरोधी टीमों के बीच की बात हो रही है. So against and whom and above is again wrong preposition here. So we can say that option number C, that is who and against. The final round has already taken place between both the finalists who had played well in the semi-finals against their opponents. So option number C is the correct one. So let's check it. Yes, option number C is right. So now come to the next question, that is question number 5. Have you ever noticed that dash car parked in front of the bungalow? Now this question is of different type, right? अभी तक हम बात कर रहे थे words and meanings and prepositions, right? This question is of different type. Have you ever noticed that dash car parked in front of the bungalow? Now bungalow, यहाँ पर बात हो रही है कार पार्क की गई है एक बंगलो के बाद. वो बंगला दिखने में कैसा है, एडजेक्टिव्स की बात कर रही है. बंगलो के एडजेक्टिव यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव फॉलो होगा. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमको बोल रहा है. यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं. ब्यूटीफुल बिग ओल्ड रेड एंटीक रोल्स रॉयस, big beautiful red old antique Rolls Royce, red old beautiful big antique Rolls Royce, beautiful old big red antique Rolls Royce. So order of adjective, according to the order of adjective, we can say first is the, it shows in like its shape, the palace quality, shape, color and the name of the thing. So according to this order, beautiful, it is the quality, big, shape, old red is the red is the color, antique is again quality and the name of the car is Rolls Royce. सेकेंड में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव डिफरेंट हो रहा है. सबसे पहले यहाँ पर बिग, इट मीन्स साइज की बात हो रही है, शेप और साइज की बात हो रही है. देन ब्यूटीफुल क्वालिटी रेड ऑल्ट, इट मीन्स ये भी रॉन्ग वन है. रेड सबसे पहले कलर आ गया, इट मीन्स अगेन इट इज रॉन्ग. ब्यूटीफुल ओल्ड बैग, इट मीन्स यहाँ पर साइज आ गया ब्यूटीफुल के बाद में, इट मीन्स इट इज अगेन अ रॉन्ग. So correct option is A, beautiful big old red antique Rolls Royce. Have you ever noticed that beautiful big old red antique Rolls Royce? Let's check the answer. Yes, answer A, option A is a correct one. Now come to the next question, that is question number 6. After hiking through the dash forest, we finally reached the top of the mountain where the dash view left us speechless. Right. First of all, try to understand the question very carefully. सारे question को the most important thing is किसी भी exam में जब भी हम उसको exam कर रहे हैं, सबसे पहले first of all read and try to understand the question carefully. So after hiking through the dense forest, forest की बात हो रही है. forest कैसा है उसके बारे में हम आगे देखेंगे. We finally reached the top of the mountain. Top of the mountain पे हम पहुंच गए. Where the dash view left us speechless. और वहां का जो व्यू था उससे हम speechless हो गए, मतलब कहने को कुछ नहीं था, इतना beautiful था, इतना awesome वहां से व्यू था. Now let's check the options according to this question. After hiking through the first option A is dense and misty and panoramic. Dense and misty, you all of know. Dense मतलब घना, right? Panoramic मतलब a view, a large view. Like panoramic means wide, complete, beautiful. Panoramic means wide, बहुत बड़ा, beautiful. Like wide, beautiful view of
लार्ज एरिया, किसी भी एक बहुत बड़े एरिया का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, पैनोरामिक, राइट. नाउ सेकंड बी ऑप्शन इज डीप एंड डेंस एंड पेंडोरा, राइट. डीप, डेंस एंड पेंडोरा. डीप एंड डेंस का मीनिंग वी ऑल ऑफ यू नो, घना, गहरा. द मीनिंग ऑफ पेंडोरा, पेंडोरा का मतलब होता है लाइक सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स. तो आई थिंक ये भी नहीं हो सकता है इसमें. ऑप्शन 1 तो हो सकता है, डेंस एंड मिस्ट एंड पैनोरामिक, इट विल बी फिट हियर. लेकिन डीप एंड डेंस एंड पेंडोरा, डीप एंड डेंस इज राइट, बट पेंडोरा समथिंग not appropriate for this. Now say option number B, C is bale and nasty and awful. Awful again means dreadful, डरावना, है ना, बहुत अजीब सा, ये भी पॉसिबल नहीं है. Strange and precocious, wonderful. Wonderful यहाँ पर हो सकता है, लेकिन precocious, precocious is a kind of a disease that it is a kind of a medicine that is used for the treatment of different allergies. So I don't think कि ये भी यहाँ पर appropriate होगा. So we can say that option number A is the right one. Let's, after hiking through the dense and misty forest, we finally reached the top of the mountain where the panoramic view left us speechless, right. Now let us check the confirm the answer. Yes, option number A is the correct one. So yes, next question, question number 7. Question number 7. The poetess's signature is dash mentioned at the bottom of her verse, like making it dash noticeable to whosoever reads it, right. So understand the question first, what it want to say. The poetess's signature is, जो कवित्री है उसके सिग्नेचर is dash mentioned at the bottom of her verse. उनकी जो कविता है, वर्स है, उसके बॉटम पर मेंशन है. अब वो कैसे मेंशन है, किस तरह से मेंशन है, वो हमको डैश में करना है. मेकिंग इट नोटिसेबल टू हूएवर रीड्स इट, ताकि उसको कोई भी आसानी से इजीली उसको रीड कर सके, राइट. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस आल्सो. फर्स्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन नंबर ए, brilliantly and posthumously. Brilliantly का meaning you all of know, so did it fit it? The poetess's signature is brilliantly mentioned at the bottom, no. The poetess's signature is prominently mentioned. Yes, prominently, we can say prominently is appropriate for this, because prominently means clear, easily visible, right. So yes, prominently maybe. Then posthumously means after the death of someone, after the death, ठीक है. The medal received posthumously, it means उसकी मृत्यु के बाद में उसको मेडल दिया गया. आर्मी में ये सारा होता है. तो posthumously, तो brilliantly and posthumously ये नहीं हो सकता. सेकेंड prominently हो सकता है, immediately भी हो सकता है. immediately means at once, importantly it may be, but reversible, no, it is not. Atrociously and comfortably, again wrong. So the correct answer is option number B. The poetess's signature is prominently mentioned at the bottom of her verse. Prominently means clearly mentioned है उसकी verse के bottom पर, making it immediately noticeable to whosoever reads it, ताकि उसको जैसे ही कोई देखे तो उसको easily read कर सके. I think option number B is correct. So let's check. Yes, let's check it. Option number B. Yes. So now question number 8. It became evident to all that the temperature in the afternoon, dash in the afternoon, catching us unawares in a light April, right. तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात की गई है. Try to understand the question. किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर की. So in the afternoon, दोपहर में, it became evident to all that the temperature dash in the afternoon, catching us unawares in a light April, right. So try to understand the options also. First of all, यहाँ expectedly splurge. Splurge का मतलब होता है to spend
money, to spend money for expensive things, to expensive things that you do not need, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उन सारी एक्सपेंसिव चीजों के लिए पैसा खर्च करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लर्ज्ड. एक्सपेक्टेडली प्लमेटेड. प्लमेटेड का मतलब fell suddenly and sharply. Suddenly and sharply. Right? So plummeted means टेम्परेचर अचानक से ऊपर चला जाता है, अचानक से नीचे हो जाता है. यस, इट मे बी, ये हो सकता है. डिस्पर्स. डिस्पर्स का मतलब डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड. होवर्ड. होवर्ड का मीन्स होता है स्टोर और कलेक्टेड इन अ लार्ज अमाउंट. कलेक्टेड इन लार्ज अमाउंट. in large amount. So now we can connect the things. It became evident to all that the temperature की बात हो रही है. Again I repeat, it means यहाँ पर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की बात हो रही है. टेम्परेचर अचानक से फेल डाउन और फेल हाई, यहाँ पर बात हो रही है. तो फेल सडनली एंड शार्पली, अचानक से शार्पली वो टेम्परेचर नीचे गिर जाता है. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ लेट अस चेक इट. Yes, option number B is the correct one. Now come to the question number 9. That is here. Yes. Dr. Sharma dash his 2 clinic assistants worked relentlessly dash to treat the COVID patients. Okay. Now यहाँ पर हमारी बात हो रही है डॉक्टर शर्मा की, जो अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं. राइट? तो डॉक्टर शर्मा, अब now connect these blanks with the options. डॉक्टर शर्मा टुगेदर विद क्लॉक. टुगेदर विद हो सकता है, बट क्लॉक विद नो. डॉक्टर शर्मा विद, यस इट मे बी, बट ओवर द क्लॉक. along with this is the most appropriate thing according to me. And around the clock, yes, around the clock is the correct idiom. Around the clock means continuously. Continuously, without stopping. So along with, around the clock, alongside no, and round some clock. It is again a wrong statement, and here the spelling is also mistake, the cock. So I think option number C, that is Dr. Sharma along with his 2 clinic assistants worked relentlessly around the clock to treat the COVID patients. COVID patient को continuously अपने 2 assistants के साथ में वो देख रहे हैं. So let's check the answer. Option number C. Yes, it's correct. Now question number 10. Question number 10. The teacher asked several questions to the class. Dash, except Sam gave correct answers to dash questions. Okay. The teacher asked several questions to the class. Teacher ने class में बहुत सारे question, अलग-अलग बहुत सारे questions पूछे. Except Sam gave correct answer to the question. So now connect these blanks with the options. First option, all of us, and this. So does it means the teacher asked several questions to the class, all of us except, yes, all of us we can write, but say correct answer to questions. Questions plural. Questions यहाँ पर plural है. So questions to this is not appropriate article here. Now option number B, all of them. The teacher asked several questions to the class. All of them, yes, we can say all of them except Sam gave correct answer to those questions. So yes, it may be, ये हो सकता है. The teacher asked several questions to the class. None of us except Sam gave correct answer to no, and none of them. So option number B is the correct answer.
the teacher asked several questions to the class. All of them except Sam gave correct answer to those questions. Questions है इसलिए यहाँ पर those आया है. यहाँ पर all of this है, all of us, ये match नहीं हो रहा. All of them and those is the correct option. So option number B. Let's check the, yes, option number B is the correct one. Now question number 11. Dash the heavy rain and strong winds. The seafarers continued their journey, dash the sea, hoping to reach the port by evening. Right. Okay. So now, dash the heavy rain, भारी बारिश होने के बावजूद. So the dash the heavy rain and strong winds, बहुत तेज हवा और भारी बारिश होने के बावजूद, the seafarers continued their journey. उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. Dash the sea hoping to reach the port by evening. इस आशा में कि शाम तक वो पोर्ट तक पहुंच जाएंगे. तो let us connect these options with the blanks. First of all, option number A, despite the heavy rain and strong winds. Yes, we can write despite here. Despite the heavy rain and strong winds, the seafarers continued their journey along the sea. Along means to the parallel. Along means parallel. So I don't think this is appropriate for this place. Now come to the second option, B option. In spite of the heavy rain and strong winds, the seafarers continued their journey across the sea. Yes, across. It means to cross the sea. Yes, this is the, both of these options are right. Across and in spite of. Option C. Although the heavy rain and seafarers, the seafarers continued their journey by, wrong preposition. On the contrary, wrong, and from. So, second option, in spite and across, is the right one. Option number B. In spite of the heavy rain and strong winds, the seafarers continued their journey across the sea, hoping to reach the port by evening. So, option number B is the right one. Let us check. Option number B. Now, question number 12. Dash months of hard work and dedication, the team finally completed the project. Dash had been delayed several times. Okay, यहाँ पे एक project की बात हो रही है जो कई बार पहले delay हो चुका है, right? So, dash months of, now let us connect the options. Before months of hard work, no, before, wrong preposition. Of the team finally completed the project that had been delayed. Second, after. We know that any sentence that talk about the we can't use before. We can use after. After months of the hard work and dedication, the team finally completed the project which had been delayed several times. Yes, it may be. Until months of, no. Until months of hard work and dedication, it is not an appropriate word. Amongst, no, amongst is used for the several people, so it is not a wrong word. So, option number B, that is after months of hard work, कई महीनों की मेहनत और dedication के बाद, the team finally completed the project. That had been delayed several times. वो project जो पिछले कई समय से कई बार delay चल रहा था, उस project को finally कई महीने की मेहनत के बाद में टीम ने complete कर लिया था. So option number B is the right one. Yes, it's correct. Now next is question number 13. By the time we arrived at the station, the train dash, and we had no choice but to wait for the next one, which dash for another hour. Okay. So try to understand the question first. By the time we arrived at the station, the train dash, and we had no choice but to wait. Okay. So first of all, look at the question and understand that there are two actions, two events had been taken place here. So, simple past and past perfect. Simple past and past perfect are very frequently used together to show the sequence of actions. Okay. Simple past and past perfect are very frequently used.
टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं, दो इवेंट्स हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं, तो दो एक्शंस के लिए फ्रीक्वेंटली हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट को हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर कनेक्ट, ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, हैज ऑलरेडी लेफ्ट एंड कुडंट कम। ऑप्शन नंबर बी, had already left, don't come. Had already left and didn't come. Have already left, wouldn't come. So remember this thing, when the two events or two action take place, then we need to remember this thing, that simple past and past perfect. These two tenses are frequently used. These two tenses are frequently used to show the sequence of action. And in the earlier action we used past perfect. In the earlier action, that is earlier action is that this one. In the earlier action we use past perfect, that is had plus V3, third form of the verb. And for the latter one, that is this, पीछे वाले एक्शन के लिए हम यहाँ यूज करेंगे सिंपल पास्ट. Simple past, that is second form of the verb. So now let us connect. By the time we arrived at the station, the train has already left. That is has, it means it is present perfect, but we need past perfect. Had already left, yes, had already left, past perfect. Don't come, this is not a simple past, that is, this is simple present. Had already left, again right, and didn't come, yes, we got the answer, didn't come, simple past. And have already left, wouldn't come, not appropriate for this question. So the correct option is option number C, that is had already left and didn't come. By the time we arrived at the station, the train had already left and we had no choice but to wait for the next one, which didn't come for another hour. So option number C is the correct one. Let's check it. Yes, option number C. So now move to the next question, that is question number 14. Sorry. She dashed for 5 hours when she decided to take a break. And by the time she dashed her rest, she dashed that she still needed to review several chapters. Question number 14. So, यहाँ पर again the same thing. Try to understand the question. Continuous action before another past action. In this sentence, continuous action before two past actions. So ऐसी condition में what we used yes. Sorry. So here we use the answer in the passive form. Had been studying, it means past perfect in the passive verb. Finished and realized, again simple past tense. So in the past event we can use it. Has been studied is the wrong one. Finished is the right, but has realized is the wrong one. Was studied, no. Finish, has realized, is studying, finishes and realizes. So most appropriate is the had been. Correct option is option number B. That is had been studying, finished and realized. That is she had been studying for 5 hours. When she decided to take a break, and by the time she finished her rest, she realized that she still needed to review several chapters. So option number B is the appropriate one and the correct one. Let's check it. Sorry, option number C is the correct one. Had already left and didn't come. Yes. So, sorry. Question number 14. हो गया हमारा question number 14. Now question number 15. Dash, did she manage to complete the project? Dash, try to excel in all the targets set by the management. Right? Question number 15.
So let's connect the question with the options. Neither did she manage to complete the project. हाँ, ये हो सकता था neither, but neither के साथ में हमेशा हम nor use करते हैं, यहाँ पर और है, so yes, this one is the wrong one. Either did she manage to complete the project or try to excel in all the target? No, both of these are not appropriate for this question. Whether did she manage to complete the project or no? Again, these are not the appropriate words. Now, not only did she manage to complete the project, but also she tried to excel in all the targets set by the management. So yes, option number D is the right one. So let's check it. Option number D. Yes, it is a correct answer. Now, question number 16. The students dash arrived late in the mess caused great fuss when they were told that there was dash food left for them. Okay, so the students who had, no, this is a wrong. Arrived late in the mess caused great fuss when they were told that there was much food. Second, option number B, the students who arrived late in the mess, हाँ, who हो सकता है, but a few is not a correct preposition here. The students whom arrived late in the mess caused great fuss when they were told there was less food, no. But the students who arrived late in the mess caused great fuss when they were told that there was no food left for them. Yes, option number D is the correct one, and both of these are the appropriate word for this question. The students who arrived late in the mess caused great fuss when they were told that there was no food left for them. So option number D is the correct. Let's check it. Yes, option number D. Now next question, question number 17. The report to the board. The report dash to the board, and after being reviewed by the various departments, the necessary revisions dash. Okay. Now, has submitted, have made, was submitted, were made, submitted, are made, had submitted, made. Which one is the correct one? So let's find out. Let's find out. The report. Report, singular noun. Yes, report is a singular noun. This is a singular noun, right? And revisions, that is again, this is plural. Revisions क्या है? Plural noun. Plural noun. So here, report is a singular noun, so it needs a singular passive verb. It needs a singular passive verb. It needs singular passive verb. And revisions, that is plural noun, so it needs plural passive verb. It needs plural passive verb. So now find out the answer. Find out the answer. So the report dash has submitted. No, it is not a passive. To the board, this is not a correct option. Was submitted, were made, submitted, are made, had submitted, made. So the passive verb in all of these options is, I think, B1. Was submitted, were made. The report was submitted to the board, and after being reviewed by the various departments, the necessary revisions were made. So option number B is the correct one. Let's check it. Yes, option number B. Question number 18. Question number 18. Public rallies dash within 1 kilometer of the Parliament House before the dash of the Commonwealth Games. Okay. Public rallies की बात हो रही है. It means यहाँ पर क्या है? Singular. The singular
नाउन बात कर रहे हैं यहाँ पर. So the sentence talk about an action that started in the past. In this question, we talk about a sentence that take place in the past and is still continuing. That is perfect. Perfect passive tense is used for this question. So let us find out the answer for this question. So the public rallies have been banned. Commencement. Were being banned. No. Inauguration, we can say it may be. Are being banned, it is a continuous. No. Contentment is again wrong. Had been banned and deception. Because we need passive verb, so I think it commencement, like have been banned and were been banned. Both of these are in the passive verb. But commencement and inauguration. Commencement is used for the games and sports. Commencement का मतलब क्या होता है? To begin or to start. To start. And similarly, inauguration का मतलब भी यही होता है. But the difference between commencement and inauguration is that commencement is used for to begin like games, sports, etc. And inauguration is used for like ceremonies. लाइक किसी भी चीज का इनोग्रेशन करना है, शॉप का इनोग्रेशन करना है, उसके लिए हम इनोग्रेशन यूज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. लेट्स चेक इट. Public rallies have been banned within 1 kilometer of the Parliament House before the commencement of the Commonwealth Games. Let's check it. Option number A, correct. Now question number 19. My whole family was upset and distressed due to the tragic incident. So I had to dash while speaking. Right. Now यहाँ पर बहुत सारे idioms दिए हुए हैं. Let's check it. Throw it up the bus. Throw it up the bus means throw someone under the bus. Throw someone under the bus. Next is take the lumps. Take the lumps means to be criticized. To be criticized for punishment. Get the note. Next is get the note. It means selected. Strike the right note. Strike the right note. It means do what is the most appropriate things. To do what is most appropriate. Most appropriate. Now here in this question, we can say to do की जगह to speak. To speak what is most appropriate. So my whole family was upset and distressed. मेरी पूरी family upset और distressed थी due to the tragic incident. जो tragic incident family में हुआ था उसके कारण पूरी family upset थी. So I had to dash while speaking. इसलिए बोलने से पहले मुझे सोच समझ के बोलना था. It means जो appropriate है, सही चीज है, उस चीज को मुझे बोलना था. तो this is the wrong. Throw it down, take the lumps, get the note and strike the right note is the correct idiom that is appropriate in this sentence. So option number D is the right answer. Let's check it. Option number D. Now question number 20. Question number 20. So after constantly making fun of the poor, he finally dashed when he was declared bankrupt. ठीक है, यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है कि आफ्टर कॉन्स्टेंटली मेकिंग फन ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का मजाक बनाने वाला, ही फाइनली डैश व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, उसको बैंकरप्ट जब डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अब इसमें बीच में हमको फिल इन द ब्लैंक्स में एक इडियम फिल करना है जो दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. सो लेट्स फाइंड आउट द वन. Option number 1, got a taste of his own medicine. Yes, got a taste of own medicine मतलब receiving the same treatment that one gives to other. ठीक है, receiving the same treatment. इसका मतलब है receiving the same treatment
रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट दैट वन गिव्स टू अदर, जो एक को कोई इंसान जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिलेगा, जैसे को तैसा तैसा बोलते हैं हम, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा. गेट द बॉल रोलिंग, इट मीन्स टू स्टार्ट an activity. To start an activity. Went the extra mile, it means to do extra efforts. Extra efforts. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head, it means to do something exactly right. What does it mean to do something? To do something exactly right. Exactly right. Now, after constantly making fun of the poor, he finally got a taste of his own medicine. Yes, it may. Get the ball rolling. No, this one not appropriate. Went the extra mile. No. Hit the nail on the head. So, option number A, that is got a taste of his own medicine, is the appropriate answer for this question. Now, yes, option number A. Question number 21. The air conditioner dash in the middle of the night, so we had to call the technicians. So, we have to call the technicians. Question number 21. So, now let us check the options. Dropped back. Dropped back means to remain beside someone. किसी के पीछे रहना. To remain beside someone. Wear off. Wear off का मतलब weak, less strong. Wear off means less strong. Less strong. It means weak. We can say weak. Broke down, bad condition. Broke down का क्या मतलब होता है? Bad condition. Grew back, it means grow again. Grow again. Grow again. So now connect the options from here. The yes, the air conditioner dash in the middle of the night, so we had to call in the technician. So the most appropriate option is option number C, that is broke down, that is bad condition. That means kharab ho jana, right? So option number C is the correct one. Yes, option number C is the right. Now next question is question number 22. Question number 22. The school administration and the principal dash the boys who kept long hair. School administration और principal dash the boys who kept long hair, जो बच्चे जो लड़के लंबे बाल रख रहे थे, and came with improper uniform to the school. जो लड़के लंबे बाल रख रहे थे और improper uniform में स्कूल आ रहे थे, उनसे रिलेटेड हमको यहाँ पर ऑप्शन लिखना है जो प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके अगेंस्ट किया है. So let us check the options. First one is cut down on. Cut down का means to reduce. To reduce. To reduce the amount. Or we can say reduce amount. Cracked down on. Cracked down on का मतलब होता है to take strict action. To take strict action against wrongdoing. Against wrongdoing. Right? To against wrongdoing. Chipped on, called on. Called on का मतलब होता है cancel. Chipped on का मतलब होता है to do something special. Right? So now let us connect the options. The school administration and the principal dash the boys. यहाँ पर punishment से related कुछ आएगा. School administration और principal लंबे बाल और improper uniform वाले बच्चों को punishment से related करेगा. So हम लोगों को answer इसी तरह से करना है. जरूरी नहीं है सारे words का, सारी vocab का meaning हमको आए. But it is very important to learn the vocabulary. You need to learn at least 10 new words daily along with their synonyms and antonyms for IEO.
स्पेशली फॉर IEO, बिकॉज वोकेबलरी बहुत सेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आप लोगों को वोकेबलरी, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी वोकेबलरी लर्न कर लेंगे, आपको वहाँ पर अपने कॉमन सेंस से थोड़ा सा चीज़ों को मिला करके, मिक्स करके, फाइंड आउट करके आंसर को पता करना होता है, राइट। सो यहाँ पर कौन सा होगा, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, क्योंकि लंबे बाल बनाना, बढ़ाना और इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना एक रॉन्ग डूइंग है, तो ऑप्शन नंबर बी, that is cracked down, that is cracked down is the correct option, right. The school administration and the principal cracked down on the boys who kept long hair and came with improper uniform to the school. Those option number B is the correct answer. Let's check it, option number B. Now next question, question number 23. Question number 23. Upon entering the class, the teacher noticed the broken benches and windows, but no one dash do their mistakes. So, अब जैसे ही क्लास में टीचर आई तो टूटी हुई बेंचेस और खिड़की को देख करके टीचर क्या करेंगे, डांटेंगी, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी बच्चे ने नहीं ली, राइट। तो यहाँ पर 1 by 1 हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बॉल्ड आउट। बॉल्ड आउट का मतलब होता है स्कॉल्ड और शाउट। ये हो सकता है, इट मे बी dashed off to do something quickly, to do something quickly. ऑन्ड का क्या मीनिंग होता है, रिस्पॉन्सिब। सो ऑन्ड आपका मतलब होता है एडमिटेड या टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आंसर हमको यहीं से मिल गया है। चॉक्ड अप, चॉक्ड अप का मतलब होता है रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट। चॉक्ड अप का मतलब होता है रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट, तो आंसर हमको मिल चुका है इन ऑप्शंस में। देन अपॉन एंटरिंग द क्लास द टीचर नोटिस द ब्रोकन बेंचेस एंड विंडोज बट नो वन ऑन्ड अप इज द ऑप्शन नंबर सी इज द correct answer, owned up to their mistakes. Let's check the answer. Option number C, yes, it is correct. Now next question, that is question number 24. She handed me dash book, preposition, ये हमारा determiners में से है questions. She handed me dash book that had been recommended by dash friend, but when I started reading I realized it was dash wrong one and I had to return it to dash library. सो ये हमारे डिटर्मिनर्स में से है, चेक करते हैं हम। शी हैंडेड मी बुक, नॉट टॉक अबाउट द स्पेसिफिक बुक, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हो रही है। दैट हैड बीन रिकमेंडेड बाय द फ्रेंड, यहाँ भी अगेन स्पेसिफिक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, लेकिन जब उस बुक को जिसकी हमने पहले बात की है, आई रियलाइज इट वॉज, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। And I had to return it to the library, लाइब्रेरी जिसकी हम बात कर चुके हैं। सो यहाँ पर ये, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बुक स्पेसिफिक नहीं है, फ्रेंड स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेकिन इट वॉज द रॉन्ग वन, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। एंड आई हैड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, तो ऑप्शन नंबर बी, yes, option number B is the right one. Let's check it. Yes, it is correct. Option number B. Now question number 20, okay, now for question 25 and 26 choose the part of the sentence that has an error, जिसमें एक error है, वो part हमको choose करना है। So quickly go through it. No sooner did I open the door when the rain heavy and stormy rushed in, making us shiver from head to toe. So let us check the options. No sooner did I open the door, इस लाइन में मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, दिस वन इज द करेक्ट वन। नो सूनर डिड आई ओपन, हमको एरर फाइंड आउट करना है। सेकेंड ऑप्शन, डोर व्हेन द रेन हैवी, यस देयर इज एन एरर। नो सूनर के साथ में क्या लगता है हमेशा, देन,
जबकि यहाँ पर क्या है when, तो when की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर then. This is the mistake over here. So option number B is the correct one. Let's find out. Yes. Next question 26. We were not able to wrap up the report at a time, so we had to ask for an extension which made our supervisor upset. I hope आप लोग सब यहाँ पे समझ चुके होंगे, बहुत ही easily find out कर चुके होंगे error, बहुत easy है. We were not able to, this is the right one. Wrap up the report at a time. Time के साथ में at preposition होती है क्या? No. On आएगा यहाँ पर, on time. On time. तो करेक्ट ऑप्शन इज, हमने यहीं पर हमको आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन, ओके, फॉर क्वेश्चन 27 to 29 चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली स्पेल्ड. ओके, यहाँ पर मैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स ग्रीडी. ओके, ऑप्शंस में से हमको वो वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग क्या है, ग्रीडी, राइट. तो अब अगेन वही चीज रिपीट करूंगी, यू नीड टू वर्क आउट फॉर द वोकैब सेक्शन. वोकेबलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन आपके वोकेब में से डायरेक्टली, मोर देन 6-7 क्वेश्चन आर देयर, राइट. तो वोकेबलरी जितनी स्ट्रांग होगी, ऑल द गेम इज ऑफ वोकेब. अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग करना है एंड यूज योर कॉमन सेंस. ओके, सो फाइंड आउट हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स ग्रीडी. ग्रीडी, ओके. तो rapacious, rapacious मीन्स, देखते हैं हम, roundel, disc like structure, it means round structure, disc like structure. ओके, presumptuous का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, prodigious, very large, or we can say powerful, right. And rapacious means greedy. So from here it is clear that the correct option is option A, that is rapacious. Let's check the answer. Yes, option A is the correct one. So now come to the next question, that is question number 28. How do you spell the word that means one who pays attention to small details. जो छोटी छोटी सी डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है. नाउ first option is Philistine. Philistine, it means a person who does not like, or we can say a person who does not like or understand or enjoy the art of beauty. Who does not enjoy the art of beauty. Right, person who does not enjoy the art of, or who does not enjoy or understand the art of beauty. Option number 3 and option number D. Option number D, we can say that panegyric, a piece of a written skill to praise someone. किसी की तारीफ करने के लिए कुछ लिखना. A piece of a writing to praise someone, किसी की तारीफ में कुछ लिखना. To praise someone, right, उसको हम बोलते हैं panegyric. Now option B is punctilious. Punctilious का मतलब a person who go in the deep details, one who pays attention to the small details. It means we can say जो छोटी छोटी सी बारीकियों को, showing great details, जो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है. It means showing great details. Showing great details. So from here it is clear that option B is the right one who pays attention to small details. Option number B. Yes, option number B is the right one. Now question number
Question number 29. How do you spell the word that means one who is bad tempered? Bad tempered, जो जिसका ill tempered हो, ठीक है. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर देंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज कैरिकेचर्स. कैरिकेचरिस्ट किसको बोलते हैं हम? कैरिकेचरिस्ट. जो आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में कार्टून्स बने होते हैं पॉलिटिशियंस के, है ना, वो कौन बनाता है? कैरिकेचर, कैरिकेचरिस्ट, ठीक है. अ पर्सन हु मेक कैरिकेचर्स आर इज कॉल्ड कैरिकेचरिस्ट. क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस हम किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली. अ पर्सन who accept something willingly. अपनी इच्छा से किसी चीज को जो एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम बोलते हैं क्रेड्यूलस. कैंटेनकेरस, कैंटेनकेरस इट मींस कैंटेनकेरस वन हु इज बैड टेम्पर्ड, दैट इज इल टेम्पर्ड. तो यहीं से हमको अपना आंसर मिल गया है. इल टेम्पर्ड, वन हु इज बैड टेम्पर्ड, that is option number C. Cantankerous is the option number C is the correct answer. Yes, option number C. Now come to the question number 30. Question number 30. For question 30 to 32, choose the correct synonym of the given word. हमको synonym and antonym का यहाँ पर ध्यान रखना है. Now चलिए question number 30. synonym हमको ढूंढना है किसका? surreptitious. सरप्टिशियस इसका मतलब होता है डन सीक्रेटली. डन सीक्रेटली हमको अब इसका सिनोनिम ढूंढना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है परवेजिव. परवेजिव का मतलब प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स. अवॉर्ड, सेकंड इज अवॉर्ड, दैट इज अवॉर्ड का मतलब क्या होता है? से firmly, publicly, to say firmly publicly what your opinion is. अपने ओपिनियन को पब्लिक के सामने खुलेआम रखना, that is the award. Supremeness, it means supreme. Clandestine, clandestine का मतलब होता है secret. So option number D is the right answer. Synonyms आपको याद करने पड़ेंगे, synonyms and antonyms आपको learn करने ही पड़ेंगे, no other choice. So go through them. Now next question, question number 31. Question number 31. यहाँ भी आपको सिनोनिम ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर 31 में conscientious, conscientious, right? Conscientious, option number 1 is debauched. Inquitious, that is unfair, unfair. और illegal हम कह सकते हैं, right? Unfair या फिर illegal हम उसको कह सकते हैं. Sedulous means showing dedication, showing dedication, right? Showing dedication. Occitant का मतलब होता है drowsiness, drowsiness. Debauched, debauched it means immoral or unacceptable. Immoral or unacceptable is debauched. Now what is the we need to find out the synonym of conscientious. Now what is the meaning of this word, right? The difficult task is what is the meaning of this word. So इसका मतलब होता है careful to do something, careful to do something. So from here it is clear that option number D is the right one, that is showing dedication. Option number D. Yes, it is the right one. Now come to the next question, that is question number 32. Cadverous, cadverous. The meaning of scurvy, thin or pale. It means weak, कमजोर दिखने वाला. Rubicant means red and rosy cheeks. Rubicant means red and rosy cheeks like. Now corpulent, fat, fat. Sanguine, cheerful. Sanguine का क्या मतलब होता है? Cheerful. So cadaverous का again क्या मतलब है? Thin and pale. It means weak one. So right option is B. Right option is showing dedication, that is sedulous.
Oh, sorry, question number 32. Yes, question, option number B. Now next question is for question 33 to 35 choose the correct antonym of the given word. अभी तक हमने synonyms किए थे. Now अब हम कर रहे हैं antonyms. Right? Question number 33. Now look at that. Obrubrious. Obrubrious. Question number 33. Obrubrious. Obrubrious का meaning, what is the meaning of this word? That is expressing scorn, or we can say scold someone, right? Or we criticized someone, like so criticized हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं criticism करना. miscreant का मीनिंग होता है क्रिमिनल. क्रिमिनल होता है मीन्स derelict, it means bad condition, very bad condition. derelict. एग्जाम्पलरी, सबको पता है एग्जाम्पलरी मतलब जिसका एग्जाम्पल हम किसी को दें, इतना अच्छा कोई होना कि उसका एग्जाम्पल हम लोग किसी को दें. तो एग्जाम्पलरी का मतलब पर्सन, someone who will be presented in front of anyone to present it. So exemplary, right? Now that can be example to others. Exemplary, exact word, that can be an example to others. miscreant क्रिमिनल हो गया है हमारा, derelict बैड कंडीशन हो गया है, लिबर्टाइन. नाउ तो हमको क्या ढूंढना था, हमको एंटोनिम ढूंढना था. तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म का एंटोनिम क्रिमिनल भी नेगेटिव में है, बैड कंडीशन भी नेगेटिव में है. एग्जाम्पलरी इज द राइट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34. Parsimonious. What is the meaning of parsimonious? That is unwilling to spend money. Okay. Parsimonious का क्या मतलब है? Unwilling to spend money. पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं होना. Unwilling to spend money. Now look at the options. सबसे पहले हम देखेंगे avaricious. Avaricious का मतलब होता है greedy. greedy, like avaricious. Then option number A is, that is penurious. Penurious का मतलब extremely poor. Penurious. Munificent. Munificent, generous. Extremely generous. Extremely generous. So from here it is क्लियर. एंटोनिम हमको ढूंढना है. अनविलिंग टू स्पेंड मनी मतलब जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता. एक्सट्रीमली जेनरस क्योंकि यहाँ पर पुअर, ग्रीडी एंड अगेन ग्रीडी, दीज डजंट मीन द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. सो म्यूनिफिसेंट, दैट इज एक्सट्रीमली जेनरस, जो बहुत ही दयावान होना, जेनरस होना, आसानी से पैसा खर्च कर देना किसी के लिए. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. That is obstreperous. Obstreperous. The meaning of obstreperous is like noisy, or we can say difficult to control. Noisy और difficult to control, जिसको control करना बहुत ज़्यादा difficult हो. Difficult to control. Now one by one we can see the options. First of all, option number A. That is vociferous. Vociferous means expressed confidently. किसी भी चीज को बहुत ही confidently expressed करना. So vociferous. Second is clamorous. Clamorous का we know confused noise. Clamorous means clamorous voice, confused noise, not clear, right? So clamorous voice ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद noisy है. तो ये तो साथ हो गया. Differential. Differential. Differential का मतलब हम बोल सकते हैं like differential means respectful. We can say respectful. यहाँ पर हम इसको meaning ले सकते हैं respectful. Like ठीक है, respectful यहाँ पर हो सकता है. और now option number D, that is recalcitrant. Recalcitrant, it means refusing to follow rules.
रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स, अगेन ये क्या हो गया, एक नेगेटिव मीनिंग में हो गया. So from here it is clear that option number T is the antonym of obstreperous. Option number C, that is differential. That is checking. Yes, it is correct. Now for question 36 to 40, read the passage and answer the question that follows. यहाँ पर passage आपको read करना है और answer आपको देने हैं. तो first of all, in such kind of question you need to first of all read the question properly and carefully. सबसे पहले questions को आप ध्यान से पढ़ें, then go to the passage and read the passage and underline the words that will be connected with the question. जो question से connected words अगर आपको passage में मिल रहे हैं उनको आप underline करते रहिए और इस तरह से आप easily questions को solve कर पाएंगे without taking much time. ज़्यादा time waste किए हुए easily आप questions को attempt कर पाएंगे. तो यहाँ पर passage दिया हुआ है related to a climate problem. क्लाइमेट की बात की गई, द क्लाइमेट प्रॉब्लम की बात की गई है यहाँ पर. उसका टेम्परेचर के ऊपर जो चेंजेस है, टेम्परेचर्स के ऊपर उसका क्या एम्फेसिस है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बात की गई है. उसके बाद में उनके मेजर्स की बात की गई है, थर्मल एनर्जी की बात की गई है, कोल की बात की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस. यस, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, ठीक है. इनकरेक्ट जो गलत स्टेटमेंट है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो choose the incorrect statement. So when we read the passage, जब हम passage को carefully read करेंगे, we come to know that all the three inefficiencies in generation, supply and consumption cover only 90% of the win over the climate problem. Merely relying on renewable energy sources is not going to cut it off. This one is the wrong. Read the passage. Passage को आप लोग ध्यान से पढ़ना. This one is the correct one. Sorry, this one is the correct one. This one is incorrect. The people of Bangalore have been, yes, इसमें बेंगलोर की बात की गई है, बेंगलोर के बारे में बताया गया है, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की है. So this is also a correct one. Using renewable energy when the yes, ये भी बात की गई है इस पैसेज में. आप पैसेज को ठीक से रीड करिएगा. You find this. So incorrect option is option number B. Inefficiencies in generation, supply and consumption cover only 90% of the win over the climate problem. जबकि आप पैसेज में ऊपर जाएंगे तो वहां पर 15% of the win over है. तो ऑप्शन नंबर B is the wrong, incorrect statement. So answer is option number B. Yeah. Now question number 37. Choose the correct option which asserts smarter solution in terms of supply chain and food system. राइट, फूड सिस्टम. ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली हमको चेक करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो पैसेज में दिया गया है. तो व्हेन वी गो थ्रू द पैसेज केयरफुली यू फाइंड आउट दैट स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज एनकरेजमेंट ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स. ऑप्शन नंबर 3, of necessary household items at the local level. And option number 5, that is production of the diverse products instead of focusing on a few commodities. That is option number C is the right one. So question number 37 का answer है C, that is statement 1, 3 and 5. These are related to the correct option. These are the correct options. So let us check out. Yes, C is the correct one. Now come to the next question, that is 38. Question number 38. The energy used to pump water from Kaveri Basin to Bangalore is, okay, ये passage में clearly दिया गया है, thermal energy that is being generated from coal. So option number C is the answer. Option number C. Now question number 39. Read statements 1 and सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है. अगेन रीड द पैसेज केयरफुली, वेरी प्रॉपरली, आराम से रीड करिएगा, बट नॉट टेकिंग सो मच टाइम. ज़्यादा टाइम हमको पैसेज रीड करने में नहीं लेना है, स्किप रीडिंग करनी है. जल्दी जल्दी से पैसेज को रीड करके जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस, उनके ऊपर जाकर, जैसे बेंगलोर वाला क्वेश्चन था तो पैसेज में जहाँ पर बेंगलोर लिखा हुआ था वहाँ पर जाकर के हमको आंसर ढूंढना है, राइट. तो अब इसमें हमको आंसर फाइंड आउट करना है.
वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को रीड करके इनमें करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, राइट. सो स्टेटमेंट 1, द फाइनेंशियल बर्डन दैट इज प्लगिंग द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड फ्रॉम द पंपिंग वाटर फ्रॉम द कैवरी बेसिन इज अ रिजल्ट ऑफ पुअर डिजाइन एंड इनएफिशिएंट इंजीनियरिंग, राइट. दूसरा है हमारा, setting up solar panels can effectively treat a design concern without an energy solution. So both of these statements are correct according to me. क्योंकि जब पैसेज हम रीड करेंगे ये चीज क्लियर होगी. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए तो आपका सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका गलत है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. Question number 40. Choose the correct synonym of the word Hamlet as uses in the passage. Again, the question is from vocab. Vocabulary बहुत strong करनी है हमको. So, यहाँ पर आप देखेंगे choose the correct synonym. आप synonyms learn करेंगे. Hamlet का यहाँ पर जो synonym है वो है birch. तो option number D is the correct option. Yes. Next, second passage, and this passage is a story. This passage is a story and very interesting story. You need to read it down. आप इसको पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं. मैं स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. आपको क्या करना है, स्किप रीडिंग करनी है. पहले गो थ्रू द क्वेश्चंस पे जाइए. वहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए हमको जाना है. यहाँ पर नरेटर है, वल्चर लाइक आइज की बात हो रही है क्वेश्चन में. ये वर्ड आया था, इसको अंडरलाइन कर लिया है. यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर फ्लोर बोर्ड की बात हो रही है, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया. जब हम क्वेश्चन तो यहाँ से आंसर उठा लेंगे. कमिटिंग द मर्डर प्रूव्स, मर्डर प्रूव्स की भी यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है तो हम यहाँ से आंसर उठा लेंगे. तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करते हुए पहले क्वेश्चन पढ़ना है. जो क्वेश्चन में वर्ड थे उनको पैसेज में जाकर स्किप रीडिंग करते उनको अंडरलाइन करते हुए जाना है और फिर हमको आंसर ढूंढना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. द मैनर इन विच द नरेटर कन्फेसेस द, इस पूरे पैसेज में The manner in which narrator confesses the, किस चीज को कन्फेस कर रहा है नरेटर? A murder of the old man. Murder of a old man. So option A is the correct. Option A is correct. Question number 42. Read the statement 1 and 2 and select the correct option. Statement 1. The narrator tried to emphasize the careful calculation of the crime. Statement 2, while trying to prove his sanity to the police, the narrator's action disclosed that he was guilty of murder. Now, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, both the statement 1 and 2 are correct. Yes, this one is the correct one. Both the statement 1 and 2 are incorrect. Option number C. Option number C is the correct one. Yes, option number C. Question number 43. Which option correctly implicates the title of the story? Title of the story, right? Story का जो title है उसको कौन सा option correctly implicates करता है? तो इस देखिए, the title refers to the narrator's guilt and how the dead old man's imaginary beating heart compelled him to confess his sin. Yes, this is the right one. The title is a simile which foreshadows the tale that burdens the narrator's heart. Wrong one. The title of the story points to how the heart will always give. No. Option number A. Option number A is appropriate. Correct answer for this question. Which option correctly explains the title of the story? जो story का title है उसको कौन सा option? That is, the title refers to the narrator's guilt. Narrator की guilt को बताया गया है. And how the dead old man's imaginary beating, उसकी heart beat जो beat हो रही थी old man की जो मर चुका है, compelled him to confess his sin. उसके sin को, उसके पाप को compel करने की उसको किस तरह से करता है? तो option number A is the right one. Yes. Now question number 43. Sorry, question number 44. Choose the correct option. The narrator's confession was fueled by his conviction that the officer knew something was up, right? The first scene
remonstrate the result of the narrator's feeling of culpability. Atop the floor lies the dismembered result of the narrator's conviction. The old man's blue vulture-like eyes manipulate the narrator into committing a heinous act for humanity. So when you go through the passage, when you go through the story, it come to you, आपको समझ में आएगा ये चीज कि option number A, that narrator's confession was fueled by, option number A, that narrator's confession was fueled by his conviction that the officer knew something was up. क्योंकि जो narrator था उसको ये अंदेशा हो गया था कि पुलिस को कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो confess कर लेता है अपने sin को. So go through the passage. So option number A, yeah. Now next question is question number 45. Which of the, now these questions are from achiever section, right? Which of the following words can be used to describe, oh sorry, this is from the passage only. Which of the following word can be used to describe the narrator? Narrator को कौन कौन से word describe कर रहे हैं, right? Question number 45. So paranoid, fretful, anxious. Fretful and anxious, both of these means worried. Both of these means worried. Paranoid का मतलब होता है unreasonable fear, बिना किसी कारण के डरना, ठीक है ना? Suspicion, right? तो paranoid भी narrator था. जब आप passage पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. Brazen and shrewd, you know, धूर्त, चालाक, right? So both of these are wrong. So I think 1, 2 and fourth one, that is option number D. Option number D is the correct. Yes, option number D. Next question, question number 46. For questions 46 and 47, choose the correct option to fill in the blanks. The management attitude to the concerned issue has remained dash for some time. So today's statement should clear the air. Okay, should clear the air. Now from here we can say the word tenacious, right? Tenacious का meaning होता है stubborn, किसी बात पे अडिग हो जाना. और ambivalent का meaning होता है unclear और confuse, or we can say confuse. This also means stubborn, अपनी बात पे अटिक रहना, किसी की बात को नहीं मानना, right? It means tenacious. Erratically means किसी भी बात को मानने के लिए confession से पहले आप किसी बात पर मानने को तैयार नहीं होना. So here the management's attitude on the concerned issue has remained confused. The management का जो attitude था इस concerned issue पर वो कैसा, has remained unclear, वो unclear था, confused था for some time, कुछ समय के लिए. So today's statement should clear the air. Clear the air, it means considerably मतलब चीजें बहुत साफ, कई हद तक. Considerably का मतलब कुछ हद तक, कई ज्यादा हद तक clear हो जाएगी. So ambivalent and considerably. Option number C is the right one. Option number C. Yes, option number C. Now question number 47. After undergoing intense dash, the accused finally decided to dash and give a blow by blow account of the incident. Okay. So देखो, affirmation एक affirmative चीज है. Make a clean sweep. It means साफ मतलब दूर हो जाना. Investigation हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? After undergoing intense investigation. It means investigation हम intense questioning के लिए यूज कर सकते हैं. Accusation मतलब आपको झूठा करवाना. Interrogation भी हम यूज कर सकते हैं intense questioning के लिए. तो यहाँ पर इन दोनों options में से एक आएगा. Now और ये दोनों हट जाएंगे. Clean in place या come clean. Come clean का मतलब साफ हो जाना, कोई डाउट नहीं रहना. तो I think after undergoing intense interrogation, it means intense questioning, बहुत सारे questions को पूछने के बाद में the accused मतलब जो accused है person finally decided to
कम क्लीन, वो चीजों को सामने लाने लगा, साफ करने लगा, सारी सच्चाई को सामने लाने लगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. या ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. Choose the option with correct spelling. Right? Correct spelling. Okay. How do you spell the word that means wrongdoing? Wrongdoing. गलत काम करना है ना. वो कौन सा वर्ड है जो इस चीज को यहाँ पर दिखा रहा है? तो मेमोरियल, मेलहर, बैलेक्री, मेलफिसेंस. मेलफिसेंस का मतलब होता है इलीगल वर्क. इलीगल वर्क. सो ऑप्शन से यहीं से हमारा क्लियर हो गया है. ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. इलीगल वर्क और वी कैन से इलीगल कंडक्ट. राइट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. चूज द करेक्ट सिनोनिम. यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम आपको चूज करना है वर्ड का. वर्ड क्या है? मैकेब्री. मैकेब्री का मतलब होता है फ्राइटनिंग. FRIGH. फ्राइटनिंग. इसका सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है यहां से. नाउ देखो, फेलिसिटेशियस का मतलब होता है प्लेजेंट. इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है, जब भी फ्राइटनिंग एक नेगेटिव चीज को शो कर रहा है. ऑडियंस का भी प्लेजेंट, अनप्लेजेंट. ऑडियंस का मतलब होता है अनप्लीजेंट. राइट. अच्छा, हमें क्या सिनोनिम हमको फाइंड करना है फ्राइटनिंग का. नाउ एल्यूरिमेंट. एल्यूरिमेंट का मतलब होता है अट्रैक्शन. अट्रैक्शन. इट इज यूज्ड फॉर अट्रैक्शन. तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर. यहाँ से हमारा क्लीन है आंसर. फ्राइटनिंग डरा हुआ, कुछ नेगेटिव टर्म में यूज हो रहा है, जबकि दूसरा प्लीजेंट और जो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट से हमारा क्लियर हो रहा है कि फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट एक नेगेटिव टर्म में हम यूज कर रहे हैं. सो द आंसर इज ऑडियस ऑप्शन सी. लेट अस सी ऑप्शन सी. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. क्लमनी. चूज द करेक्ट एंटोनिम. हमको यहाँ पर एंटोनिम हमको यहाँ पर ढूंढना है. देखो, क्लमनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लमनी? दैट इज फॉल्स एक्यूजेशन. इट मीन्स झूठा आपको आरोप लगाना, किसी भी तरह से फॉल्स एक्यूज करना. राइट. नाउ ऑप्शंस यहाँ पर है. फर्स्ट ऑप्शन इज एन्यूंडा. इट मीन्स इंसल्ट. इसका मीनिंग होता है इंसल्ट. राइट. इंसल्ट. वेनरेशन का मीनिंग होता है ग्रेट रेस्पेक्ट. ग्रेट रेस्पेक्ट. राइट. नाउ ऑब्लिक. ऑब्लिक का मीन्स होता है टू अब्यूज समवन. अब्यूज समवन. एंड ऑप्शन नंबर सी aspersion. दैट इज accuse someone और punished someone. का क्या मीनिंग होता है? accuse someone. हमको क्या ढूंढना है? हमको फाइंड आउट करना है एंटोनिम ऑफ क्लमनी. क्लमनिंग का मीनिंग हमने बोला था फॉल्स एक्यूजेशन. एक्यूजेशन, दैट इज accuse. सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर. हमको एंटोनिम ढूंढना है. एंटोनिम यहाँ पर इंसल्ट है, एक्यूज है, ये सिनोनिम है. ऑब्लिक अगेन अब्यूज, नेगेटिव टर्म्स. So answer is veneration, that is great respect. So option D is the correct answer. Yes, option D is the correct answer. So by this we conclude this session. Thank you so much. Hope you will enjoy. Thank you so much.